हेलो एवरीवन। सो आज फिर से मुझे लगा कि एक और वीडियो बनाना चाहिए और Q1 का रिजल्ट सीजन तो स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव सम अपडेट्स जो कंपनीज की आ रही हैं आजकल। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एथर एनर्जी के साथ। और एथर में ये न्यूज़ है कि हीरो मोटो कॉर्प जो ग्रुप है दैट इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट अनदर 1000 करोड़ का वो स्टेक लेना चाहते हैं। And the next thing is that government of India is going to invest about 200 crores in Ather Energy. Um, ये बहुत important है समझना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इज विलिंग टू इन्वेस्ट 200 crores, एंड दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। क्योंकि गवर्नमेंट जनरली प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करती है और उनको है ना वहीं पे सेफ्टी लगती है फॉर द कैपिटल और वॉट एवर एलोकेशन दे डू। बट दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और मैं वही चीज़ अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो आई थिंक इज एक्चुअली हैपनिंग हियर एंड इट इज़ अ फैक्ट। सो दिस इज नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी या कुछ, बट it's just a general feedback, as a investor that I like to give कि government is very proactive and they are understanding कि ये जो war के वजह से जो energy का dependence है ऑन द ऑयल व्हाट इंडिया फेसेस, जो हमें क्राइसिस फील होता है जब क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाता है, आवर इन्फ्लेशन गेट्स अफेक्टेड। आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली एंड दे आर ट्राइंग टू प्रमोट एथर इसीलिए बिकॉज इट इज वन ऑफ द लीडर्स इन सेटिंग अप दैट चार्जिंग स्टेशंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो वो सॉफ्टवेयर भी बनाता है एथर, है ना, अलॉन्ग विद द टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग इट डज। So that is something that is very critical, and there is, I think, no one like Ether who is able to do that, and government is trying to support that. So even if you come up with a business tomorrow, that benefits the country as a whole, I'm sure the government is going to support you also. So that is how it is. So Ether is going to do very well. Government itself is bullish on that. ठीक है, अभी वो profitable नहीं है Ether, but I think soon they will be profitable. So again a very good update Ether के perspective से, तो उसको देखना ध्यान से, and I think you should keep Ether on your radar. Although you think that 1 year back stock was 300 rupees, now you feel that it is about 1200 rupees. Then also I'll tell you that with the market cap of around 50,000 crores, this can still go higher. 50,000 crore का market cap तो बहुत कम है. I think this could be easily a 2.5-3 lakh crore company in the next 4-5 years, सो ह्यूज प्लेटफॉर्म और ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सकता है यहाँ ईथर का अगर हम देखेंगे तो। एंड देन दे आर विलिंग टू डू QIP ऑल्सो। तो QIP का मतलब यही है कि कंपनी स्टेक बेच कर पैसा रेस कर रही है, एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी पॉजिटिव बिकॉज दे फील दैट देयर इज डिमांड एंड दे नीड मनी टू फ्यूल दिस एक्सपेंशन एंड दिस ग्रोथ। तो ये बहुत अच्छा है और QIP भी बहुत पॉजिटिव है। Of course, you might have a little volatility in the stock price after QIP, which is normal, लेकिन लॉन्ग टर्म जो बिजनेस है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो दैट इज ऑल set for a long run. So you should not get bothered about that. Ether looks very good. Next is SG Finserv, again a good NBFC विथ अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। अब इसमें थोड़ा ये हो गया था कि उन्होंने पहले 40 to 50% का गाइडेंस दिया था, फिर उन्होंने पिछले क्वार्टर्स में गाइडेंस को रिड्यूस कर दिया। ऑफ कोर्स दैट्स lending space was going through a rough patch, maybe a year or a year and a half back। तो जब ये फेज चल रहा था तो उन्होंने अपना गाइडेंस को घटा दिया, उस वजह से स्टॉक प्राइस भी गिरा एंड पीपल वर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट SG Finserv, बट देन दे हैव कम बैक अगेन। रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। Q1 में उन्होंने 50 करोड़ का पैट दिखाया है, and I think they can easily do about 250 crores of PAT in the whole फाइनेंशियल ईयर, ये जो FY27 हो जाएगा हमारा, तो इसमें ये कर देंगे 26-27 का ईयर जो है। तो आई थिंक दे विल डू अबाउट 250 crores, which is very good. So the stock can easily double from here. Of course I'm not giving any recommendation, लेकिन अगर उन्होंने जो अभी प्रॉफिट दिखाया है उस हिसाब से अगर हम उसका प्रोजेक्शन लेते हैं तो
from this level also the stock can easily double. And guidance की अगर मैं बात करूँ SG Finserv की, तो they have come back again to this 50-60% का number, which is very good. तो guidance आप हो जाता है, and because of that the stock also starts to move again. सो दैट इज़ हाउ इट इज़। और स्मार्ट मनी वही करता है, ये जितने भी स्मार्ट मनी मतलब पीपल हु हैव गॉट लॉट ऑफ मनी एंड हु आर वेरी गुड इन्वेस्टर, दे ऑलवेज रीड द कॉन कॉल, और उसके डायरेक्शन से ही आपका स्टॉक प्राइस डिसाइड होता है। सो अगेन अ वेरी गुड अपडेट इन एच डी फिनसर्व। और अगर आप जनरली देखोगे तो ये लेंडिंग स्पेस बहुत अच्छा कर रहा है, बैंकिंग शुड डू वेल इन जनरल, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी पिकी विथ स्टॉक्स। ग्रोथ नहीं है तो वही एच डी एफ सी बैंक ले लोगे तो आप फंस जाओगे, उसमें पैसा नहीं बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज भी देखोगे तो अच्छा कर रहा है ना, पूना वाला इज डूइंग वेरी गुड। So I'm just giving you good business models who are actually benefiting from this positive momentum in the lending space जो है, तो ये सब प्लेस हैं। ऑफ कोर्स एस जी फिनसर्व का रिजल्ट आया है इसीलिए उसको डिस्कस किया है मैंने। अगेन अ गुड बिजनेस मॉडल, एंड आई थिंक दे कैन कंटिन्यू टू कीप ग्रोइंग एट दिस स्पेस। और फिर उनका जो एनपीए नंबर है वो बहुत कम है, इट इज़ क्लोज टू नील। So that again gives you confidence कि you will not have a lot of bad debt here. That is what it is. And then the third is Aurum Proptech. It is into real estate, and they have this online platform where they're trying to connect the customers, the brokers together. They're trying to build a platform जहाँ पे transparency आती है। Real estate is not very transparent in India. People find it very difficult to find a property. You always have to go through a broker is not transparent, वो दोनों parties को मिलने नहीं देगा, miscommunication करेगा, and there is no platform where you can just approach. It is only a word of mouth, or you network through someone to sell your property, liquidity का issue आ जाता है। तो ये problem को solve करने देख रहा है PropTech, and they're going to use this AI platform to do this. So they're going to use technology to do all this, and एक अच्छा platform है जहाँ पर आप जाकर do the real estate deals with a lot of ease. So that is there, and you should look into this। Aurum PropTech का एक अपडेट जो है वो ये है कि it is acquiring this housing.com, एक्विजिशन कर रहा है उसका, एंड ड्यू टू विच उसका रीच बढ़ जाता है। सो अगेन अ गुड अपडेट। Aurum PropTech again should become profitable now, and I mean it should drive higher profitability, and it's already profitable of course, लेकिन वो profitability और बढ़ जाएगी मुझे लगता है, and it's going in the right direction। So that is what it is. So the profits will only increase from here on. Next quarter I expect that it should be in profit, and the profitability should be really high. So that is what it is। Projection तो वही कहता है कि break even हो जाएगा, and then the platform would really make some substantial money। Right now they are just trying to बी एट पार, तो ये बहुत ज़रूरी एक्विजिशन कर रहा है। एंड आई थिंक द रियल एडवांटेज व्हाट यू वुड गेट हियर इज ऑपरेटिंग लेवरेज आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगा। अगर सेल्स का ग्रोथ मान लीजिए 40% होता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको हो सकता है कि 60-70-80% का मिल जाए। अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इज दिस कार ट्रेड का बिजनेस। जस्ट फॉर कंपेरिजन अगर आप वो देखोगे ना तो वैसे ही मॉडल है ये ऑरम प्रॉपटेक का। तो अगर आपको कार ट्रेड समझ में आता है बिजनेस मॉडल, तो ऑरम प्रॉपटेक भी उसी की तरह है। सो जस्ट फॉर कंपेरिजन रीजन यू कैन जस्ट रीड अबाउट द अदर बिजनेस एज वेल। सो दैट इज ऑल टुडे। अपडेट्स के बारे में ही बात करना था मुझे। थिंग्स लुकिंग वेरी गुड, लॉट ऑफ मनी टू बी मेड यहाँ पर। उतना बुरा सिचुएशन नहीं है। इंडेक्स के को अगर आप देखोगे तो आपको लगता है कि पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन अंडरलाइंग मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी बहुत पैसा बन रहा है। म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत पैसा बनाया है, द गुड वंस। Just to name a few, you can look at Motilal small cap. Again, not a recommendation. You can do your readings, but 3 to 6 months returns are anywhere between 18 to 20%, and that is very good. So, अगर stock picking है तो you can make money from mutual funds also। कोई aggressive scheme ले लेना small cap वाला मोतीलाल की तरह। Of course, I have no vested interest in मोतीलाल. I'm just giving an example क्योंकि उनका एक aggressive portfolio होता है
और इसी वजह से मैंने बोला कि मोतीलाल ने बनाया। बाकी भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो बनाते हैं, बट बंधन, इन्वेस्को, ऑल दीज म्यूचुअल फंड्स आर वेरी अग्रेसिव. So nothing like Motilal is something that I'm trying to be biased about. लेकिन ऐसे aggressive schemes का आपको देखना है. अगर आपको stock picking नहीं आता तो again mutual funds could be a good option in the small and mid cap space. So that is all, and make sure that you keep reading about the updates also. इससे आपको पता चलता है कि अगर कंपनी और अच्छी कर रही है तो आपको और allocation कहाँ लगाना है. So that is all for today, and I'll be coming up with some updates about the results. We'll discuss, and try to cover this earning season so that we know that what is the position of the business, and then वहाँ से हम project कर सकते हैं कि आगे कैसे होगा. But I have a good feeling that results अच्छे आएंगे mid और small cap space में. अभी तक तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, and things should only keep getting better. Thank you.